We are about to begin our next session, screening of Rahm. It is directed by Ahmad Jamal and produced by Mahmood Jamal. And Mahmood Jamal Saab is just going to come up on the stage and give us a short introduction to the movie. महमूद साहब आप कुर्सियाँ रखवानी है या कुर्सियाँ रखवानी है या नहीं अभी तो कुछ नहीं होना तो फिल्म दिखाएंगे उसके बाद नहीं आप एक शॉर्ट 2-4 लाइनों का नहीं तो मैं खड़ा होकर वो लेक्चर अच्छा, ठीक। जो भी आएगा वो उधर से ठीक ठीक है ठीक है तो ये सब माइक हटवा दीजिए ये सब कुछ हटवा दिए सब कुछ जल्दी जल्दी ये भी हटा ये बस रहने देना अभी ये फिल्म दिखा रहे हैं ना तो बीच में आ जाएगा माइक्स भी हटा ये नहीं कुछ नहीं रखना है यहाँ मूवी दिखा रहे हैं। ये माइक्स जल्दी से हटा माइक उनको बोलो सेट करो अपनी जल्दी से हटा रहे हैं कुर्सियाँ नहीं आएंगी बाद में क्वेश्चन आंसर जो करेंगे यहाँ पे कर लेंगे ठीक है उसकी आप कुर्सियाँ चाहिए Will you call them because आप उनको फ़ोन कर रहे हैं साजिद हसन एंड मैं पूछ लूँगा अगर है तो आ जाए नहीं आए तो मैं बात करता हूँ ठीक है तो आप एक क्वेश्चन आंसर वो तो आगे वो क्वेश्चन आंसर जी जी तो अभी एक आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें जी तो अब मैं आपको कर लूँ इनवाइट Mr. Mahmood Jamal on the stage and give us a short introduction on the movie Rahm. Mahmood Jamal Saab. Hello? Hello? Can you hear me? Yes. This film is called Rahm, which is mercy. Now, why Shakespeare's Measure for Measure, which is 400 years old, has to be made into a film in Urdu and shot in Lahore? That can be an interesting question to ask. The issue is that when Shakespeare wrote Measure for Measure nearly 400 years ago, the conditions in Britain or England were in some ways quite similar, which is not to say that we are 400 years behind, it's just to say that the issues and the conflicts that were taking place in England at the time were reflected in some way in what is happening not only in Pakistan but the whole of the Muslim world, which is a conflict between a very narrow and very juridical interpretation of Islam versus
the humanist and other aspects of Islam. So I chose to use this play to give a message of tolerance, forgiveness, and mercy. As you know, our Quran starts with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So that is very important in the modern world and in the stage we are in today to express the idea of mercy as the guiding force of our religion. Now, in Shakespeare's time, the Puritans were trying to influence the political situation in England. And they were trying, and they also believed in very similar thing to some of the more extreme aspects of our political spectrum. So please watch this film. I have remained true to Shakespeare and very closely followed his language, but in Urdu. So I feel this is also a first time, probably of very few occasions, if any, that Shakespeare has been interpreted in a Sufi way by a Muslim country and by a Muslim sort of writer. So I hope that you'll enjoy the film. I think what I'd like to do is to know if Mr. Sajid Hassan is here. If he is here, I'd like him to join me on the stage. If not, then he'll be here. Sunil Shankar, who's also acted in the film, will be here. Sirat Jafri, they'll all be here to take questions and answers from you. So, without much ado, let's start the film. Thank you.
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अरे कासिम मियाँ, आप? क्यों मौलवी साहब, मैं अभी तो यहीं रहता हूँ। लेकिन वो हमने तो सुना था कि आप कभी यहाँ कभी वहाँ। अच्छा वो समीना आ रही होगी, आप प्लीज बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम बेटी, बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुना बेटी, फिर से वो कल यहाँ से याद किया था मसनवी का पहला हिस्सा। जी मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विष्णु वज़्ने चुन हिकायत मी कुनद। गा के सुना बेटा। विष्णु वज़्ने चुन हिकायत मी कुनद। वज़ जुदाई हा शिकायत मी कुनद। विष्णु वज़्ने चुन हिकायत मी कुनद। वज़ जुदाई हा शिकायत मी कुनद। जेंटलमैन, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बसंत के बहाने हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। बसंत शहरियों का हक है, लेकिन इसकी आड़ में गुंडागर्दी करने वालों पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। सर, कानून का डर लोगों के दिलों में नहीं रहा है। सर, सब लोग ऐसे नहीं हैं। चंद नौजवान जोश में आके कुछ हरकतें कर गए हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। माफ़ कीजिएगा नवाब साहब, इस तरह की बेगैरती सख्ती के बगैर नहीं रोकी जा सकती। हमारा कानून बहुत सख्त है काजी साहब, लेकिन गलती हमारी है कि हमने बहुत ढील दे रखी है। लेकिन वक्त आ गया है कि इस बात का इलाज किया जाए।
सर, अगर कानून में सजा ना हो तो एक मजाक बनकर रह जाता है। बेहयाई की हद हो गई है। कॉलेजों में लड़कियां स्टेज पर नाचती हैं और यानी का वो आलम है कि मेरी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। सर, ऐसे काम में जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए और ना ही जल्दबाजी करनी चाहिए। ऐसा कोई कानून जो हमारे पुलिस के बस में ना हो, उसे जबरदस्ती नाफिज करना अक्लमंदी नहीं है। और फिर ये जो शिद्दत पसंद हैं, ये तो किसी भी बहाने शोर मचाते रहेंगे। सही है नवाब साहब, लेकिन हमें भी उन्हें मजीद बहाना देने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में इस शहर की हुकूमत सिर्फ 3 महीने के लिए आ जाए, सबकी माँ बहनें कर दूंगा। बहरहाल कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा और जल्द करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग भी सोचें, हम भी सोचते हैं। थैंक यू। नवाब साहब जी, आप जरा रुके, हमें 1 मिनट बात करनी है आपसे। काजी हाथ के बारे में आपका क्या ख्याल है? आदमी अच्छे हैं मगर सख्त हैं। मगर सख्ती की तो हमें जरूरत है। हर शख्स ये समझता है कि अगर वो इक़्तिदार में हो तो सब कुछ ठीक कर सकता है। नवाब साहब, क्यों ना इनको मौका दिया जाए ताकि ये अपने जोहर दिखा सकें। जैसे आपकी मर्जी। वैसे जो कोई भी आता है नया इलाज ही लेकर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। गार्ड्स! साहब कैसे मिजाज हैं? नवाब साहब। जी हुजूर। अब कैसी तबीयत है आपकी? कदरे बेहतर है। तो क्या ख्याल है आपका हमारे फैसले के बारे में? सर, इक़्तिदार में जो भी आता है हटने का नाम नहीं लेता। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है। तुम काजी साहब को बुलाओ। हम जानते हैं नवाब साहब कि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा चारा क्या है? लेकिन सर, ये भी तो सर, आपका हुक्म सर आंखों पर। हालात ऐसे हैं कि हम एक नया दौर शुरू करना चाहते हैं। हमारी सेहत ठीक होने में वक्त लग सकता है। काजी अहद, हमारी गैर मौजूदगी में आपसे बेहतर गवर्नर इस शहर को नहीं मिल सकता। इसीलिए आज से हम लाहौर के शहरियों को आपके रहम करम पर छोड़ते हैं। सर, आपने मुझे ये इज्जत दी, लेकिन सर वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। आप काम शुरू कीजिए। शुक्रिया और खुदा हाफिज। चलो।
Congratulations. बड़ी तैयारी हुई है? आता हूँ थोड़ी देर में। कितनी देर में? मालूम नहीं। क्यों? कहाँ जाने का इरादा है? दोस्तों से मिलने का। मुझे पता है कहाँ जा रहे हो। जब पता है तो फिर पूछ क्यों रही है? मोहल्ले वाले बातें करते हो, तुम किसी की भी नहीं सुनते। सफिया और मेरा निकाह हो चुका है, अब दोबारा तो नहीं हो सकता। कैसा निकाह जो छुप के किया गया? अल्लाह के नज़दीक तो कुछ नहीं छुपाना। अच्छा, हम लोग वलीमा कर लेंगे। जैसे ही सफिया के वालिदैन वापस आएंगे हम लोग वलीमा कर लेंगे और मैं उसे यहाँ बुला लूँगा। जमाना आजकल ठीक नहीं है कासिम। दुश्मनी में लोग पता नहीं क्या। और फिर सफिया के वालिदैन भी इस शादी के खिलाफ है। वापस आकर पता नहीं उनका कैसा रवैया होगा। आप बहुत टेंशन लेती हो समीना। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सफिया, मैं आ गया हूँ। सारा सामान टेबल पे रख दिया मैंने तुम्हारा। एंड दिस इज फॉर आवर एनिवर्सरी। लाजवाब हो तुम, खुदा की कसम। मगर कब तक छुपा के रखेंगे? इधर आओ, बैठो। Along with Mahmood Jamal Saab and Sirat Jafri, Sunil Shankar, Sajid Hassan and Mahmood Jamal. Please come on the stage. नहीं अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज We had to remove the chairs because of the film. आइए आइए, this is Sunil Shankar. He and Sirat, they both played a wonderful role in our film. Sajid Hassan is not here, although he was I'm told he was coming. Magar, there's a famous Shakespearean actor called Claire Bloom, who, when she saw the film, and I don't take anything away from any other, she said that this man is a major talent. And she's done Measure for Measure several times on the stage. Right here. So now, if there's any questions to any of us, we'll be happy to answer them. Thank you. If there are no questions, then we can just close the day. वेल एक एक्टर या एक आर्टिस्ट की लाइफ मैं थोड़ा सा उसको बस शेयर करना चाहूँगा।
हम यहाँ कोई भी पिक्चर देखते हैं या कोई भी प्ले देखते हैं, 1.5 घंटे में हम ये तय करते हैं कि एक्चुअली कि ये फ़िल्म कैसी होगी। बाज़ औक़ात हम 10 मिनट में भी ये तय कर लेते हैं कि ये फ़िल्म कैसी होगी या प्ले कैसा होगा। लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत होती है। आई रियली मैं सराहूँगा महमूद साहब को कि इट्स अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। नॉर्मली शेक्सपियर को कोई अडेप्ट नहीं करता है। नॉर्मली लोग सेफ जोन ढूंढते हैं ज़्यादातर, और शेक्सपियर को अडेप्ट करके पाकिस्तान में सेट करना और उसको इस तरीके से, ये कंटेंट भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता था बिकॉज इट इज़, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इसको किया और इसको अटेम्प्ट किया, एंड इट्स अ गुड एफर्ट। एंड इतने मिनिमल बजट के साथ हमने इसको फिल्माया इस सब्जेक्ट को, एंड दैट्स इट। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हम 1.5 घंटे में तय कर लेते हैं कि फ़िल्म कैसी होगी या थिएटर प्ले कैसा होगा, लेकिन इट टेक्स, लोग सालों लगा देते हैं। ये तकरीबन कितने साल, आप काफ़ी अरसे से इसको, मतलब 10 साल से कोशिश हाँ, कर रहा 10 था साल से बनाने की, कोशिश कर रहे थे, आखिर में जाके बनी। या मेरे भाई अहमद जमाल वो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, मैं तो राइटर था। और 10 साल पहले जब मैंने ये प्ले स्टेज पे देखा लंदन में, मुझे महसूस हुआ कि ये तो बिल्कुल जो इसमें जो इश्यूज डील किए गए हैं वो बिल्कुल हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भी इनसे, असल में मैसेज इसका है लिव एंड लेट लिव। शेक्सपियर भी यही कह रहा था उस ज़माने में 400 साल पहले, इंग्लैंड में जो प्योरिटन टेक ओवर होने वाला था उसके बाद, उसको उसने प्रेडिक्ट कर दिया था। और उसने कहा कि हर तरह कल्चरल डाइवर्सिटी और मुख्तलिफ राय और मुख्तलिफ तरह के लोग किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, तो उसका क्या सलूशन है, उसमें क्या 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 मुश्किलात पैदा होती हैं। जी सॉरी, मैंने कभी शेक्सपियर को पढ़ा नहीं है, तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या था। मेरे लिए एक पाकिस्तानी मूवी थी जो मैं देखने चली गई विथ माय डॉटर हु इज़ लाइक 19। तो शुरू में उसने कहा कि ये क्या आप मुझे बोरिंग मूवी में ले आई हैं, या तो पुराने पुराने घर दिखा रहे हैं और बाबा दिखा रहे हैं। बट यू नो बाय द मिडल ऑफ द मूवी शी वॉज मेस्मराइज्ड कि मम्मा ये तो बहुत अच्छी मूवी है और इसमें इतना अच्छा मैसेज है। तो आई थिंक दैट I was quite taken aback when these comments came from a young girl, you know, who, उसके लिए मूवी ये है कि उसमें डांस हो, गाना हो और बहुत फैशन हो। लेकिन even I just want to compliment all the set and everybody that you were also able to impress an 18-year-old girl. थैंक यू। इधर आ जाए। First, I'd like to congratulate all of you. It was a very well done performance. The acting was superb. एक बात है जी that leaves me a little puzzled ending के बारे में। लास्ट में गवर्नर साहब ने समीना बेगम से क्या बात कहनी थी? Seriously, I'm worried. And when she's walking home, she looks very worried. She's fretting. She's not happy. Could you please explain that? एक्चुअली ये अच्छा सवाल है, इसलिए कि शेक्सपियर में आखिर में सबकी शादी हो जाती है। इसमें हमने छोड़ दिया ओपन क्वेश्चन कि समीना से वो प्रपोज करता है, लेकिन वो अभी डिसाइडेड नहीं है कि एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, तो उसको ज़रा से ज़्यादा पावर दे दिया। हालांकि शेक्सपियर में दोनों की शादी हो जाती है आखिर में। जी, I had the same question. I'm here. Same question, that what happens to Samina in the end. But then it's a very, what should I say it, a cliched ending, leaving it to the audience's imagination. But maybe you should have followed measure for measure and that ending. I think so. We had a lot of arguments about that between writer, director, actor, as to how to leave it.
अच्छा ये बहुत अच्छा लगा especially the way it was photographed. It wasn't boring at all. It depended a lot on close-ups. It was very, very effective filming. And the last part, I think the way you left it open was also very creditable because there should be a bit of change, a bit of mystery. Doesn't matter whom you are adapting it from. If it's Shakespeare, you did capture the message of Shakespeare. If you wanted to alter it a bit with the leaving the end an open-ended thing, that was good too. I just wanted to ask whether this film has been screened in theaters. It has actually. In Pakistan it was released, but very low key. That is because we had a problem with the distribution here. But we are releasing it in London and in France in March and April. I would like Seerat to say something because she's here and she's done a wonderful job. You know, I don't want to hog the whole thing. Please. Thank you. Thank you so much. I just, I want to say it's always a pleasure working on any kind of set, whether it's theater, film, or television, in which the wrap-up time is 9 p.m. on paper, and at 8 p.m. someone shouts out, "Wrap up." And it's the best feeling ever. Because this was my first experience being in a film. And it was the crew that we were working with, the production crew, was so organized. It was actually unbelievable how organized they were. And everything, we were ahead of time, ahead of schedule. So regardless of what the movie is like, regardless of what Shakespeare is and what he said and what he didn't say and what the ending was and what my character was, it was an absolute pleasure working with these people. And I'm so lucky that I got on board. And it was, the best feeling is when the director, he calls out action. Ahmed Jamal Saab would call out action. And he would also say, "Whenever you are ready." So there was no pressure. He knew that it required a lot of emotion, a lot of method acting, and it was difficult. So it's good working with a director who understands that this is going to be a little difficult for me, so he bears with you. So he was like a friend, like a father, like a director, like a boss. Like, he was everything. It was great. So regardless of what reviews the movie gets, regardless of what, you know, the end result is, I had a great experience. And this makes me very proud. Thank you so much. सर मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली मेरा क्वेश्चन आपसे भी है और सीरत मैम से भी है वो ये कि गवर्नर आपको पता था इज़ ए कल्प्रिट ठीक है तो फिर भी आपने उसके लिए फॉरगिवनेस सीख की कि उसको माफ़ी दी जाए बीइंग अ लेडी सीरत साहब आप मतलब कैसे क्या फील कर रही थी उस वक्त कि वो एक कल्प्रिट हैं बट यू आर सीकिंग फॉरगिवनेस फॉर हिम ना और यही मेरा सर से भी है सवाल कि बीइंग अ राइटर जब आप ये लिख रहे थे तो आप क्या फील कर रहे थे पहली बात पूरा सवाल मैं ठीक से सुन नहीं पाया लेकिन जो सुना है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको जी सर आपने उसको माफी देने के लिए मतलब बात की जी जी सीरत असल में इसकी थीम यही थी माफी की मगर ये बहुत मुश्किल सवाल है जैसे वो कहता है कि जब मैं मैं जब इंसाफ करता हूँ तो एक किस्म का रहम ही करता हूँ और ये बड़ी इसमें क्वेश्चन जो है मॉरल वो बहुत ही सख्त है कि
वो फिर बहन से कहता है कि तुम में और इस सख्त कानून में क्या फ़र्क है कि तुम अपने भाई को मरने दे रही हो एक छोटे से काम ना करने पर। तो ये एक बैलेंस हो, शेक्सपियर की है बात। मैं चाहता था कि जितने करीब उसके ओरिजिनल के रह सकूं मैं रहना चाहता था। वैसे आप, ताकि उर्दू में लोग शेक्सपियर को भी अप्रिशिएट कर सकें, इस ये मेरा मकसद था। और मैं इन लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें हमारे साथ काम किया और बड़ी अच्छी तरह से काम किया इन लोगों ने। और ये हमारी पहली एक्सपेरिमेंट थी पाकिस्तान में। हालांकि ये उस तरह की कमर्शियल फिल्म नहीं है, वो तो आप खुद समझ गए होंगे, मगर फ़र्क ये होता है कमर्शियल फिल्म और इसमें आप इसको 3 दफ़ा देखेंगे तो तीनों दफ़ा एंजॉय करेंगे। कमर्शियल फिल्म एक दफ़ा देख सकें। Is there any more question? इनका दूसरा आपका सवाल था कि मुझे कैसा लगा। मुझे कोई फॉरगिवनेस नहीं हो रही थी फीलिंग असल में। ऑनेस्टली अगर मेरे साथ ये होता पर्सनली तो मैं तो कहती इसको फौरन फांसी लगाएं आप, ठीक है ना नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स रॉन्ग। या आई मीन आई वुड नेवर accept this kind of relationship. But having said that, as an actor, we have to transform and we have to understand that there are characters out there, not just in fiction, but in reality as well. Yes. इसमें जो forgiveness की बात है, because in Shakespeare's time, maybe he thought that forcing him to marry the woman he had abandoned is a kind of resolution to that. तो उसको फिर फांसी क्यों दें? आप समझे? ये भी बात सही है। अच्छा, सुनील भी कुछ कहना चाहेंगे because I think Sunil would be able to answer this correctly from a man's point of view. But because I did play a woman whose husband was everything to her, although they didn't have a relationship. But there are women out there, and in Mariam, the character that I played, she didn't need him for any kind of financial security. I think it was more emotional security. She needed a home, a family, and she wanted her family, her husband to be with her. Because also, I think Mahmood Saab, it was you or Ahmed Jamal Saab who said something very beautiful to me on set. He said, regardless of what the man is like, sometimes just the fact that he has so much power is very attractive to a woman in a very dark kind of way. So he was very attractive in that sense, that he has so much power. He's abusing it, regardless of that. But yes, it was difficult, but as an actor, you have to, for example, if tomorrow I have to play a psychotic serial killer, obviously it goes against my moral values, but this is what we do. We have to tell a story. Thank you. I hope that answers your question. Yeah. Thank you. I just wanted to say actually because Shakespeare is so great, उसका एक एक किरदार इतने डायमेंशंस में बना हुआ था, so you can talk and talk and talk. मैं उसी चीज़ को मैं इस तरीके से भी देखता हूँ बिकॉज शेक्सपियर ने इस किरदार को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि औरत जो है वो रहम का एक पहाड़ है उसके साथ, और वो एक तरह से एक जिसको हम कहते हैं कि चंडी का रूप भी है वो, सही है। तो उसके अंदर जिस तरीके से जो बात हो रही थी कि जब वो इतना उसने काजी हाथ ने इतने बीइंग अ कल्प्रिट इतने सारे गलत काम किए, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन वो ये देखें व्हाट शेक्सपियर इज़ डूइंग, शेक्सपियर क्या कर रहा है आपकी ह्यूमन्स जो लाइक बीइंग अ मेल बीइंग अ फीमेल उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर रहा है। देखें एक ह्यूमन साइकी है, मर्द की कैफियत, मर्द की जहनी कैफियत, आइडियोलॉजी ये बहुत डैंगलिंग है, यह है इस तरीके से औरत इंटरनली बहुत स्टेबल और बहुत स्ट्रॉन्ग है, सही है। तो ये सारी चीज़ें भी इन्हीं किरदारों के थ्रू लेयर्स में निकलती हैं विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अडेप्ट। एंड अगर आप असल में पढ़ें खेल को तो वो आपको बहुत समझ में आएगा कि जो डायमेंशंस हैं जो फ्लेवर्स हैं, तो
तो इसमें इस तरीके से निकालने की कोशिश की गई कि एक मर्द किस तरीके से फ़ौरन पटरी से उतर सकता है और एक औरत कितनी स्ट्रॉन्ग और लाइक इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है डिफरेंट सिनेरियोज में। सो ये सारी चीज़ें हैं। एक और भी चीज़ है कि आई थिंक प्यार के ना मोहब्बत के बहुत सारे शेड्स होते हैं। एक वो फूल पत्तियों वाला भी शेड होता है जो बहुत प्यारा होता है, एक बहुत डार्क शेड भी होता है प्यार का जो दुनिया को नहीं समझ में आता कि ये दो आपस में कैसे प्यार कर सकते हैं दूसरे को, लेकिन वो करते हैं। वो एक और शक्ल होती है प्यार की, वो एक डिपेंडेंसी होती है, एक फुलफिलमेंट, एक यू नो एक फीलिंग ऑफ डिज़ायर। हाँ, मतलब मियाँ बीवी की भी जो रिलेशनशिप होती हैं अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जानते बूझते भी इग्नोर या डिनायल कर देते हैं। ओके थैंक यू एवरीवन। Sorry, our time is up, but I would like to thank everybody for watching the movie. And also, I want to say one thing. The clear message that attracted me to this play was the idea of diversity in a society and the idea of live and let live, and the idea that justice must always be tempered with mercy. And this is the message of the film. And that the drama revolves around that. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Hopefully, we'll see you tomorrow morning. Sessions begin at 10 in the morning tomorrow. Thank you.